Hello, friends. Once again, welcome you all to this book review club. I hope you are relishing these reviews. So, today we will be having our video number 3 of our second book, Monk Who Sold His Ferrari. So, today's video is, I will say, one of the most important videos of this book because we will be covering chapter number 9 of this book, which is because when I read this book for the first time, I felt this chapter to be the most transformational chapter of the entire book. So the chapter title is Ancient Art of Self Leadership. तो इस चैप्टर में हम आज इस वीडियो में वो सारे रिचुअल स्टडी करेंगे जो एज पर दी सेजेस which are the basis of personal transformation or which are the basis of self mastery. So they will be discussing a lot of rituals in this chapter, but before coming to those rituals, let's just have some introduction of this chapter. तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट रेज किया गया है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. So what is this Kaizen? So Kaizen is like daily improvement, the focus on daily improvement. So as per the sages, if you have this awareness that मुझे आज improve करना है अपने आप को, I have to be better than yesterday and I have to inculcate something new, some new habit, or I want to just incorporate some new wisdom. So that awareness to improve every day is Kaizen, daily small improvement. So they say if you incorporate that, transformation can happen very very soon. So another very important point raised in the initial part of this chapter is do the things which you fear the most. वो चीज़ें ज़िंदगी में करना शुरू कर दे जिनसे आपको डर लगता है, उससे आपका जो वो अंदर का ब्लिस है, अंदर की जो हैप्पीनेस है वो बढ़ेगी. बिकॉज जो फियर होता है वो हमें श्रिंक करता है, हमें लिमिट में रखता है. एंड इफ यू वांट टू फील दैट लिमिटलेस हैप्पीनेस, you have to start doing those things which you fear. Like they have given one example that if you are afraid of public speaking, try to learn how to speak in public. Try to you can engage in courses. Lot of courses are available, so learn that skill and just just keep working, just take action on your fears. So that is the point which is raised in this chapter. Like they have given this example of baby कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई फियर नहीं होता, पर स्लोली वो फियर आता है. तो अल्टीमेटली वी आर फियरलेस बाय अवर नेचर. सो वो हम अपनी नेचर को अडॉप्ट कर सकते हैं इफ वी हैव दिस अवेयरनेस कि मुझे वो सारी चीज़ें करने शुरू करनी है जिससे मुझे डर लगता है. नाउ वी विल स्टार्ट द रिचुअल्स. तो इस चैप्टर में 10 रिचुअल्स बताए गए हैं, 10 रिचुअल्स which can make a person super happy also, and he can transform his life in all the different areas, whether it is work or family or self. So he can transform that. So let us start with the first ritual number 1 talks about ritual of solitude. तो वो कहते हैं, सेजिस कहते हैं कि हर दिन आपका ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि मुझे अपने आप को कुछ टाइम देना है व्हेन आई एम इन साइलेंस. दे से कि आवर माइंड्स इन दिस टुडेज इन्वायरमेंट, इन दिस टुडेज वर्ल्ड, लॉट ऑफ नॉइज इज देयर. तो हमारा मन जो है बड़ा टर्मोइल में आ जाता है. माइंड उसको स्पेस चाहिए, उसको ऐसा टाइम ज़रूर दे व्हेन इट इज़ इन टोटल साइलेंस. सो एक दे रिकमेंडेड कि अपने घर में एक कॉर्नर में या किसी रूम में अपना इस साइलेंस कॉर्नर बनाएं और उसको बड़ा डेकोरेट करें एंड गो टू दैट एरिया एवरी डे. एंड इफ़ पॉसिबल दे रिकमेंड कि एक सेम डे पे मतलब सेम टाइम पे जाएं हर दिन, उससे आपकी वो हैबिट बन जाएगी. एंड दे से कि इट हैज़ मैजिकल रिजल्ट्स. एंड आई ऑल्सो फील द सेम बिकॉज आई डू दिस एंड आई टेल यू दैट इज़ माई कोर सीक्रेट ऑफ वट एवर आई हैव गेन्ड इन माई लाइफ. सो दिस इज़ अमेजिंग, द फर्स्ट रिचुअल. The second ritual talks about ritual of physicality. So ritual of physicality means give time to your body. Like me, they focus in this ritual on exercise. So in this sages have given lot of importance to yoga.
that you should give lot of importance to yoga, their yoga postures, pranayams and everything, like a complete yoga package. You all know the importance of yoga. But along with yoga, or if somebody is not feeling connected to yoga, they have given different options like walking. So early morning walking they have recommended, and or some other exercise. So keep exercising, and they have recommended 1 hour of exercise every day. That will change. And one more point here in this ritual, they have mentioned that if you take care of your body, it will automatically result in taking care of mind. So it is not only taking care of your body, you are taking care of your mind also, because body and mind are connected. Third ritual is very very beautiful, ritual of radiant living. So कैसे अपनी लाइफ में वो रेडियंस, वो स्पार्क ला सकते हैं? तो दे सेड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज व्हाट वी टेक इनसाइड, दैट इज अवर डाइट. So they say that you have to be very very focused on what you take inside, and they recommended live foods. When they say live foods, it includes vegetables, grains, fruits, and we all know that this is very important. But one practical strategy which they have offered is by which it will become our habit, that take salad with every meal, and replace your desserts with fruits. So because we take breakfast, lunch, dinner, so try to have a habit कि मुझे lunch में salad लेना ही लेना है तो अपने मील के साथ, तो वो हैबिट बन जाएगा. और डेजर्ट खाने की हमें आदत होती है, तो उसको फ्रूट से अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो फ्रूट भी हमारी इंटेक बन जाएगा. सो वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक दे हैव ऑफर्ड हियर. एंड वन मोर थिंग दे हैव मेंशन्ड वेरी नाइसली, that 38% of Finland, there's a country called Finland, they started vegetarianism. They have left non-vegetarian diet, and within 7 months they have realized a very very big change in their life. They felt less tired and more alert, more alive. Their happiness level has gone up. So somewhere they are recommending a vegetarian way of life, and if possible adopt to this. And then fourth ritual, and we have covered 3 rituals: ritual of solitude, physicality, radiant living. Fourth ritual is ritual of abundant knowledge. So they have given lot of importance to the knowledge in life, to whatever we read, to the information available around the globe. So they say choose wisely what you read. Choose your books, which books you want to read. Choose the courses which you want to go for, like you have gone for this book review, and similarly you must have enrolled in different courses. So they say every day give priority to read for minimum 30 minutes. That is the time they have given, कि 30 minutes के लिए डेली आप रीड करें और अपने आप को इक्विप करें नॉलेज से. एंड इसमें एक और पॉइंट बताया गया इस पॉइंट में, इस रिचुअल में, कि जो भी आप ये पढ़ते हैं या कोर्सेज में सुनते हैं या ये बुक का रिव्यू भी आप सुन रहे हैं, इससे आपको डिस्कवर वही होगा जो आपके अंदर ऑलरेडी है अंदर. सो you will be able to discover the inner thing which is already within you. So the entire knowledge, entire wisdom is already there. God has given that within us. These books, this wisdom will help us to rediscover that. So that is the beautiful thing which is said in this ritual. The next ritual, number 5, ritual of personal reflection. ये क्या कहता है? Personal reflection कि मैंने अपने 52 हैप्पीनेस हैबिट्स कोर्स में भी ये बड़ा इस पे एम्फेसिस किया है इस रिचुअल पे, एंड इट इज़ लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. वो क्या कहता है ये रिचुअल ऑफ पर्सनल दिस रिफ्लेक्शन, कि आप दिन में कोई टाइम आइडली बिफोर यू गो टू स्लीप, that visualize the entire day in your mind, visualize how you have wake up in the morning, what you have done, और पूरा दिन आपको विजुलाइज करें और फिर देखें कि क्या आप चेंज करना चाहते हैं. लाइक इसमें एग्जांपल दिया है कि पर्सन सुबह उठता है, वो ऑफिस जाता है, वो लेट हो रहा होता है बिकॉज उस बार टाइम कम होता है, तो ब्रेकफास्ट भी प्रॉपरली नहीं ले पाता, और बड़ी जल्दी गाड़ी चलाता है, ऑफिस पहुंचता है, उसका आर्गूमेंट्स होते हैं कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ भी कुछ अच्छा मीटिंग नहीं होता,
एंड ऑन द वे बैक उसको वो ट्रैफिक मिलता है, तो वो ट्रैफिक को भी बहुत ज़्यादा कर्स करता है। ही गिव्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी टू द ट्रैफिक, की ट्रैफिक क्यों है, मतलब ही फील नेगेटिव अबाउट दैट। तो ये सारा कुछ वो विजुअलाइज करता है कि मेरा ऐसे सारा दिन रहा, तो वो रिप्लेस करता है कि अगर मैं मॉर्निंग आधा घंटा पहले उठ जाता तो मैं वो हरी जो मेरे अंदर थी सुबह की, वो हरी में ना होता मैं। आई वुड हैव ईजिली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। मैंने ब्रेकफास्ट प्रॉपर लिया होता, मैं गाड़ी स्लो चलाता, आराम से ऑफिस पहुंचता, मेरी वो ऑल्ट्रेशन ना होती, मेरा वो माइंड पीसफुल रहता। एंड सो इवनिंग में भी मैं ट्रैफिक तो रहना ही है, आई कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट टाइम फॉर सम गुड ऑडियो। मैं कुछ ऑडियो सुन लेता और अपने माइंड को पॉजिटिव रखता। तो वेरी ब्यूटीफुल रिचुअल, इट इज़ रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। रिचुअल नंबर 6, रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग। ये रिचुअल बोलता है अपना जल्दी उठना सुबह, अर्ली अवेकनिंग एंड स्टार्ट योर डे वेल। इट टॉक्स अबाउट कि मॉर्निंग 10 मिनट मिनिमम अपने दिन को जैसे ही उठते हो, पहला जो थॉट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ हैबिट्स इसमें बताता है कि सुबह उठ के क्या क्या करना चाहिए। यू हैव टू रीड समथिंग एंड देन यू हैव टू if possible walk in the nature and laugh. So a lot of priority is given to laughter, because laughter creates inner happiness juices active, and your entire day will be very amazing if you laugh in the morning. That's why in the yoga you have seen they laugh artificially also, but that also has amazing benefits. So that is about the ritual of early awakening, and they recommended if you can add that heart of rose exercise which we covered in the last video, do that also, because that is recommended by the sages. 7th ritual of music. So they say that every day find time to hear good music, and because music has a tremendous power to calm our inner mind, and we will be able to calm ourselves and able to find that energy which we need to do anything. So that is there in the 7th ritual. And the 8th ritual is the ritual of spoken word. They say कि whatever you say from your mouth, it has amazing power. बहुत शक्ति है उसमें। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर आपको लगता है कम है, या आपको लगता है यू आर नॉट दैट समथिंग विच यू फील इज लैकिंग, लाइक यू आर नॉट इंस्पायर्ड या यू आर नॉट that energy, say like I am inspired, energetic and very confident. Once you do these affirmations, say that, automatically they say that your power of whatever you say is so much that you will feel that energy coming in, and you will be taking the actions to acquire those things which are missing in your life. Rather than saying what is missing, say the opposite, and you will get the energy to acquire that. So whatever you say, be very cautious, because it has magical power. So power of spoken word. And then the next is ritual number 9. Ritual number 9 is ritual of congruent character. ये कह रहे, इसमें ये बताते हैं that you have to build your character by taking right actions every day. So how that so they have given a sequence. Thought. So first have a good thoughts. If you have good thoughts, it will create into action. Action will create into habit, and good habits will create into good character. So this is the sequence which they have given in this ritual. और वो जो बाकी जो हमने जो पीछे कल्टीवेशन ऑफ माइंड बात करी, वो थॉट्स उसमें अच्छे आने शुरू होंगे. तो जस्ट इस रिचुअल में बताया गया कि अगर आपको अपना अच्छा कैरेक्टर बनाना है, बिल्ड करना है, तो फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग गुड हैबिट्स, जो ये सारा बुक में बताई जा रही है. देन द लास्ट रिचुअल इज रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू लीड ए वेरी सिंपल लाइफ. सो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताई है कि अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी with whatever you have, then there will be no end, because whatever you that it will create that it will become a habit. Even if you tomorrow become a millionaire, you'll be wanting more. But they have then when this ritual was being shared, in the other person who was hearing has asked a question that somewhere at the back you said the importance of goal, the importance of achievement. तो अगर हम सिंपलिसिटी में रहेंगे और हम हैप्पी रहेंगे जो हमारे पास है, तो देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट.
तो very beautiful question he asked. So answer is given by the sages is that your goals and whatever you do is to look forward, with inspiration. But always remember that happiness and the fulfillment, you don't need to postpone. You can feel it right now, because whatever happiness is there, it is within you. The goals, the direction, the achievements are just to feel inspired for some activity and just to keep going towards some direction. So she said that always remember that the happiness is in the journey, not in the destination. So so these are the 10 rituals given by these sages in this amazing chapter. So I hope you have liked the today's review, and I will be back again with the next video with the next chapter. I think we have covered 9 chapters of this book, and now we are left with around 3 chapters more. So we'll be covering it, I think, in the next. So we are left with 4 chapters more. So I think another 2 videos or maybe 3, but I will be trying to cover whatever is there in the book. So so that you don't have to read it, you can just implement it right away. So thank you for hearing out, and I request you to please share your feedback, whatever you are implementing out of the reviews. And also I would like to share that I have started doing one 52 happiness habits course also, which is basically to all those people who wants to deliberate on each happiness habit in detail. So I have made that course on my own. So every day one habit is being shared through video and through WhatsApp, and literature is being sent, and weekly I interact with people for that particular habit. So that is something which I am doing because I love spreading happiness. So anyone who's interested, you can join that course. So I hope you have liked that today's review, and so do share your feedback and comments, and keep smiling and keep spreading happiness. Thank you.